Hello everyone. Today we are going to discuss the new topic that is log and exponential functions, and it is related to paper 3. Now this will be the syllabus we have to follow. We have to keep these things in our mind that the questions in the CIs will be related to these points. Now सबसे पहले तो जो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, what does this topic mean? The topic name is log and exponential form. Log and exponential form. So what does log mean? Log means जिस क्वेश्चन के अंदर आपके पास log आ रहा हो, और exponential form means exponent or the power. So the first point related to this topic is we must know that how to convert a logarithmic form into an exponential form. Similarly, an exponential form into a logarithmic form. So we must know that how to convert logarithmic form into an exponential form and exponential form into a logarithmic form. तो इसका बड़ा सिंपल सा वे है, वो आपने माइंड में रखना है, वो ये है कि आप this will be, let's say we have a question like e power x is equals to y. Now this is an exponential form. If you want to write it into logarithmic form, so what we have to do, we have to write it like this: log of y to the base e is equals to x. अब आप अगर इसमें गौर करें तो यू विल सी हम इसमें दो पॉइंट्स कर रहे हैं कि हम x और y की पोजीशन को ही चेंज कर रहे हैं. तो यू कैन सी हियर कि y और x की आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. बाकी आप क्या कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं कर रहे. जो भी चीज़ फंक्शन यहाँ होगा, जो भी नंबर यहाँ होगा, उसको आप बेस में लिख रहे हैं. एंड वाइस वर्सा, इसी तरह अगर आपने लॉग की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इसी प्रोसेस को यूज करेंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल दैट लेट्स से 2 पावर x इज इक्वल्स टू 5. इसको अगर लॉग की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, सो दिस विल बी log of 5 to the base 2 is equals to x. तो इसको आप इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं. log of 5 to the base 2 इज करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब पॉइंट इज के कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे. कैलकुलेटर पे यू कैन सी दिस इज द फॉर्म log of 5 to the base 2. इसको आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. हियर दिस विल बी x will be equals to 2.32. But the main point over here is that how to convert a logarithmic form into exponential form and exponential form into logarithmic form. Similarly, अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो log of x to the base 2 is equals to 8. So इसमें अगर आपने फाइंड करना हो, इसको log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, so you will write 2 power 8 is equals to x. तो वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है सारे सब क्वेश्चंस के अंदर. हम बेसिकली इन दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, और जो भी डिजिट यहाँ होगा उसको आप क्या करते हैं, बेस में ले जाते हैं. नाउ दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. जिसको ये पॉइंट समझ आ गया उसको लॉग के सारे क्वेश्चंस में इजीली कर लेगा, अगर वो प्रॉपर्टीज को माइंड में रखेगा, जो प्रॉपर्टीज में भी आपसे डिस्कस करने वाला. Let's move to the next point. The second point is कि कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं. ठीक है, जिसमें रूल नंबर 1 क्या है कि अगर दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो यू विल राइट इट एज
log of x प्लस log of y। और अगर यही दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड हो रहे हो, x डिवाइडेड बाय y, then you will write it as log of x minus log of y। सिमिलरली अगर आपके पास एक थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर स्टार्ट में कोई फंक्शन हो log के, log of a log of x, so we can write this one as log of x to the power a। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको पास पेपर से ही करवाऊंगा बिकॉज ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहें। तो मोस्टली हम यही प्रॉपर्टीज़ को, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एक और प्रॉपर्टी है इसमें, एक और प्रॉपर्टी तो नहीं, एक रूल है आपके पास। थर्ड रूल ये है कि वी मस्ट नो कि अगर आपके पास लेट्स से log ऑफ x टू द बेस 10 हो, देन इसको आप यूं भी लिख सकते हैं log ऑफ x, क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो मैंने किसी भी रूल के अंदर बेस को कंसिडर ही नहीं किया, और उसकी रीज़न ये थी कि जब बेस मेंशन ना हो इट मीन्स दैट द बेस इज 10। और दूसरी बात ये है कि log ऑफ 10, ये जो log की प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेस कोई भी हो सब के ऊपर यूज इम्प्लीमेंट होती हैं। सिर्फ आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप की सारी बेसिस सेम हो तब आप लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर बेस सेम ना हो तो फिर आपको पहले बेस को किसी तरह से सेम करना होगा और उसके बाद आप लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपके log की बेस e हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, तब आप इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। सो नेचुरल लॉग का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग वो है जिसके अंदर आपके पास बेस क्या हो, व्हेन बेस इज e, व्हेन बेस इज e, तो इसको आप नेचुरल लॉग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये नेचुरल लॉग पे भी इम्प्लीमेंट इस पे होती हैं। देन कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो खैर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास खैर उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, दीज आर द मेन पॉइंट्स। जितना अगर मैं आपको सिंपल से फॉर्म में कहूँ आपसे, तो ये आपके पास यही पॉइंट्स हैं, यही लॉग का मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए कोशिश करेंगे कि डिफरेंट तरह के पास पेपर क्वेश्चंस करें। जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पास पेपर क्वेश्चंस।
these are the questions. We will start from May-June 2020 and we will follow the same pattern. Now this one is the first question. Show that the equation natural log of 1 plus e power minus x plus 2x is equals to 0 can be expressed as a quadratic equation. Now here we can see that this one is this one will be show that the equation this. So this will be, we can write this one as log of e whole power 1 plus e power minus x is equals to minus 2x. बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग हो तो नेचुरल लॉग को आप क्या लिख सकते हैं? नेचुरल लॉग का मतलब ये है कि आपके पास बेस क्या है? बेस आपके पास e है. तो हम फोर्थ पॉइंट को यूज कर रहे हैं, तो हमने नेचुरल लॉग को इस फॉर्म में लिखा एंड देन वी विल यूज द फर्स्ट पॉइंट कि लॉग को कैसे आप लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं. सो वी विल यूज दिस पॉइंट. अब हमें पता है कि दिस विल बी ई पावर, दिस विल बिकम ई पावर माइनस 2x बिकॉज इस पूरी फॉर्म को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है. दिस विल बी ई पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई पावर माइनस x. तो अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख लिया. एंड फर्दर अगर आप चाहते हैं कि ई पावर पॉजिटिव एक्स की फॉर्म में हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी divide e power minus 2x on both side. Divide e power minus 2x on both side. So finally this will be 1 is equals to e power 2x plus e power x. बिकॉज आप पावर्स को ऊपर लेकर गए हैं एंड देन सिंप्लीफाई किया है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया. नाउ द सेकंड पार्ट इज हिंस सॉल्व दिस इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट लेट्स रीअरेंज दिस वन. ई पावर 2x प्लस ई पावर x minus 1 is equals to 0. Now this one is a quadratic equation. Now we know that this will be, let's say, let a is equals to e power x, then a square will be equals to e power 2x. So a square plus a minus 1 is equals to 0. Now directly we can use the calculator and we can find out the value of a. Now shift mod 5 3 and this will be a is 1, b is 1, c is minus 1. So this will be equals to, let's say, 0. Now a will be equals to 0.62. Then a will be equal, the second value of a will be equals to minus 1.62. Minus 1.62. This will be the second value. Now for the first value, what we have to do, we have to replace it with this thing because a is equals to e power x. Solve means we have to find out the value of unknown variable. और unknown variable यहाँ पे x है, so we will replace a with e power x. अब ये देखें तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास अगेन x आपके पास पावर्स में चला गया, तो इसको हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक लॉग की फॉर्म में. सो लॉग ऑफ 0.62 इज इक्वल्स टू x, विच मीन्स अब यहाँ से हमने किया कुछ भी नहीं है, किया सिर्फ ये है कि हमने इस फॉर्म को चेंज किया. हमने देखें x को और 0.62 की फॉर्म को आपस में चेंज किया है बिकॉज लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में ऐसे ही जाते हैं. और e को आपने क्या किया? e को आप बेस में ले गए. I hope that the concept is clear. Now x will be equals to, अब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, that this will be equals to log of, अब e क्या है?
E आपके पास ये है, E 0.62, 0.62. So this will be minus 0.478, minus 0.478. Correct to 3 decimal place? Yes, so this will be the answer. Now let's check the second one. Now let's check this one. So this will be e power x is equals to minus 1.62. So log of minus 1.62 is equals to x. So x will be equals to, now here we can see log of e power minus 1.62. So this will be a math error. So keep this thing in your mind कि negative number का log नहीं होता. So we will not consider this one solution. This will be the only solution. I hope कि इस question से भी आपके concepts clear हुए होंगे कि how to find, how to simplify, how to use the log properties. So inshallah in the next class we will discuss the remaining questions. We will solve the past paper questions related to log and exponential form. Quickly से एक quick review देते हैं. सबसे पहले we have discussed the syllabus. ये points आपको पता होने चाहिए. इसमें excluding the change of base. Change of base is now not included. And use laws of logarithm पे हमारा focus था. Indices की laws आपको पता होने चाहिए. Properties of e power x, natural log of x ये पता होनी चाहिए. Transform given relationship of. So इस फॉर्म में हमने अभी डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, बट लॉग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन यू मस्ट नो द बेसिक रूल्स ऑफ लॉग, एंड देन दिस विल बी द प्रॉपर्टी, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अ पास्ट पेपर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.